Hello and a very good morning to all our viewers out there. You're watching the morning news on CNN News 18 and I'm Sriya Kundu, here to take you through all the top stories of the day from across the nation and around the world. Well, we have some breaking news coming in right at the top of the segment, wherein ahead of Prime Minister Modi's visit to the United States this month, United States Secretary of State Antony Blinken spoke about the ties between the two nations, saying, and I quote, "We see this defining relationship as a unique connection between the world's oldest and the largest democracies, with a special obligation now to demonstrate that our governments can deliver for and empower all our citizens." He also spoke about building a prosperous Indo-Pacific ties as well. Now, so this is what he has said right ahead of Prime Minister Modi's visit in the US, and it definitely speaks a lot about the kind of diplomatic ties that the two democracies are building and the strengthening of ties between them. And since the Indo-Pacific has been quite an important point that was brought about in the Quad meets as well, this is going to be a prime focus, especially for the two countries when they definitely sit down together. We do have some reactions coming in on this. Let's have a look at that. We see the importance of the partnership in a shared commitment to address regional and global challenges, promoting health security, working with our Quad partners to build a free, open, secure, prosperous Indo-Pacific, where people, where goods, where ideas can travel freely and rules are applied fairly. I have witnessed India's constructive leadership on these issues up close these last 2.5 years. And I see it in their ambitious agenda at this year's G20. Simply put, we see this defining relationship as a unique connection between the world's oldest and largest democracies, with a special obligation now to demonstrate that our governments can deliver for and empower all of our citizens. As Atul said, we are a week away from the historic state visit of Prime Minister Modi to the United States at the invitation of President Biden. There is great excitement on both sides, as you can see. My Prime Minister is only the third Indian leader in our independent history to be accorded the honor of state visit by the US President. He also will become the only Indian leader to address the US Congress twice. Now, we saw the reactions that we got from both sides, and now we have our reporter Abhishek Jha joining us on this broadcast. Abhishek, a very good morning to you. Well, we've heard both sides of how it went, and it is definitely an important meet that's coming up for Prime Minister Modi. And like he said, this is going to be the first Indian leader who's going to be addressing Congress twice in the US. So what is the importance of all this that is happening right now, and how is it going to play out in the geopolitical arena? Of course, Shriya, see, India and USA have been coming close in the past 2 decades, at least because of multiple geostrategic and geopolitical reasons. But in the recent years, we have seen a big and major push for the relationship that is between India and USA. In fact, India relationship of USA with India has a bipartisan support in USA as well. We have seen how Prime Minister Modi was welcomed warmly and hosted by previous President of USA, Donald Trump. He was from Republicans, and now the Democratic Party's President Joe Biden has showed equal keenness to host Prime Minister Modi over the dinner in White House. In fact, Prime Minister Modi will be only the third leader in the history of independent India who will have a state visit announced by the USA side. So clearly that engagement and the keenness is on the both sides, and as the Indian ambassador in the USA was saying, that the keenness is on the both sides, the excitement is on the both sides for the visit, and India and USA are both looking forward to have a more robust collaboration in defense, in strategic ties, in economic cooperation, in issues like climate change, energy transition, sharing critical technology aspect, and artificial intelligence, cyber security. So all aspect of bilateral relationship will be something that President Biden and Prime Minister Modi will be discussing during the visit of PM Modi's Washington visit.
Right. And Abhishek, could you also take us a bit into the depth of what all we expect from this visit of Prime Minister Modi there? Like, we know that Indo-Pacific ties will be will definitely be a important focus for the two sides to discuss. See, India is having the chairmanship of G20. So this is one area where both sides will express their commitment. USA has in the past also expressed its commitment to support India in its G20 presidency. And with the current geopolitical tension that is between Russia and Ukraine, India would need a very solid support from all the members of G20 to come out with a joint declaration, possibly after the G20 meeting. So clearly, the cooperation on multilateral organization is something that will be on the card. Then, of course, the strategic tension, geostrategic tension, that is in Taiwan Strait, if we can talk the Chinese aggression in South China Sea, or keeping the Indo-Pacific free, open, and transparent for all international trade partners is something also that will be on the agenda between the two prime ministers. Then US has said that they share the democratic values between the two sides. So issues like that can also be discussed. And also about this climate change, the financing of overall climate change, sharing the expertise, technology transfer from USA to India so that India can, further have its more robust Make in India concept, or USA investors can come to India and facilitate more infrastructure build up. So these are all the issues that will be discussed when Prime Minister Modi will be having a conversation with the US President Biden. Right. Thank you so much for all those details and information, Abhishek. Well, definitely there is a lot to look forward to from this meet of Prime Minister Modi. But for now, we're going to shift our focus to a different story. गाजियाबाद के 2 पुलिस कांस्टेबल और हमारी मुंद्रा पुलिस की टीम थी, उन्होंने जाके अलीबाग से आरोपी को अरेस्ट किया है। खोखली दलील देते हुए वे कह रहे हैं कि गेमिंग ऐप से कोई धर्मांतरण नहीं होता। चुनावी राजनीति के लिए वे तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। Now, we've been tracking the developments of this story from Ghaziabad, wherein in a major breakthrough, the prime accused in the gaming conversion racket, Shahnawaz Khan, alias Baddo, who was arrested from Maharashtra's Thane district on Sunday, is in transit remand until June 15th and will be produced before the court after arrival in Ghaziabad. Now, with a number of days spent on his arrest, Ghaziabad police believe that Baddo, alias Shahnawaz, was getting some back-channel support. There is also a possibility, which police is not ruling out at this point, wherein that Shahnawaz was just another character and directions or guidance was given from some other person who's potentially the actual mastermind. Ghaziabad police say that it has received 5 complaints against the accused from different places. Now, the police has prepared a list of questions on the basis of statements and digital evidences given by the victims in this case. Now, we're shifting focus to another very important story that took place yesterday, wherein a large number of Haryana farmers staged protests against the minimum support price for sunflower seeds and raised other demands in Haryana's Kurukshetra. The protesting farmers blocked the Delhi-Haryana National Highway demanding fair MSP for sunflower seeds. Now, they had gathered on the flyover near Pipli in Kurukshetra district. Apart from leaders of various CUPs and Bharatiya Kisan Union leader Rakesh, wrestler Bajrang Punia also extended his support to the protesting wrestlers. The protesting farmers claimed that the state government was not buying sunflower seeds at the MSP and they were being forced to sell their produce to private buyers at a lesser price.
सूरजमुखी फसल की एमएसपी को लेकर के किसानों का आंदोलन जारी है और नेशनल हाईवे, ये चंडीगढ़ से दिल्ली का नेशनल हाईवे है और इसको पूरी तरह से जाम कर रखा है। एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है जो 3 कानूनों को लेकर के था, जो 3 कृषि कानून सरकार की ओर से बनाए गए थे, उसको लेकर के जैसा दिल्ली बॉर्डर पर नजारा देखने को मिला था, वैसा ही नजारा एक बार फिर से यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि वैसे ही लंगर शुरू हो चुका है। यहाँ सभी जो किसान आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है, उसके अंदर भी यहाँ किसान डटे हुए हैं और लंगर चल रहा है। वहीं पानी के टैंकर चल रहे हैं, पानी की फ्री सेवा चल रही है, तो वहाँ पूरी तरह से लंगर की सेवा चल रही है और सब जो यहाँ किसान डटे हुए हैं उनके लिए भोजन आया हुआ है, सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक आंदोलन की रूपरेखा थी वही है और उसी तरह से आंदोलन चल रहा है। लेकिन एमएसपी की मांग है, एमएसपी की मांग सरकार पूरा करती है, कब करती है, क्योंकि उसी को लेकर के ये पूरा आंदोलन चल रहा है। जाम कहाँ रहेगा तो सरकार चाह रही खुलवा दे इसको, भाई सरकार तो खुलवा सके, लेकिन या तो बात से खुलेगा और या भाई पुलिस की गाड़ी से खुलवा दो, जो चीज से भी खुलवाना चाहते हो। इनकी तो लड़ाई थी कि हाईवे जाम किया था, जब भी लाठीचार्ज हुआ था और फिर आज नहीं कर रहा है इन्होंने कुछ। अब पता नहीं, अगर रोकते तो हम तो वहीं बैठ जाते। पुलिस ने ही कहा कि आगे चले जाओ, सड़क छोड़ी है वहाँ। अच्छा, हमारे पैसे दिलवा दो, एक आधी बात हमारी भी कह दो, एक आधी बात कह दो प्यार से, हमारी भी, हमारे पैसे दिलवा दो। वो तो देखने का फर्क है, हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। आप और नीचे, आपको ऊपर का दिखाई देगा। नहीं, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो हर नजर से ना 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 ना, सरकार से दोबारा बातचीत होगी। हाँ, हो जाएगी बात तो। Well, now we're moving on to some stories from the weather cycle, wherein as Cyclone Biparjoy intensified into an extremely severe cyclonic storm, Prime Minister Narendra Modi called a meeting on Monday to review the preparedness in the wake of the approaching cyclone. Prime Minister Modi has directed the officials to take every possible measure to ensure safety. Now, control room will be functioning 24/7 and 12 teams of the NDRF teams equipped with boats have been pre-positioned. Biparjoy is set to make landfall near Jakhau port in Gujarat on June 15th, whereas Mumbai is put on high alert. Now, around 7,500 people have been shifted to safer places, and a proper evacuation operation will begin from today for people residing in villages located within a distance of 10 kilometers from the coast in Kutch Saurashtra districts. ये जो विंड स्पीड है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्तने से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। जो थेटेड हाउस है, जो टीन हाउस है, एस्बेस्टस हाउस है, ओल्ड पक्का हाउस है, इसके साथ साथ जो टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स, टेलीफोन पोल्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग हो सकता है, डिस्टर्बेड हो सकता है और बड़े बड़े ट्री अपरूटिंग हो सकता है। टाइडल वेव आता है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, वो लगभग 3 से 6 मीटर तक हो सकता है। सो ये जो 2 से 3 मीटर हम बोल रहे हैं, 2 से 3 मीटर टाइडल वेव आएगा साइक्लोन की वजह से, वो इसके ऊपर आएगा। जो ऑफशोर इंडस्ट्री वो एरिया में ज्यादा है, उनको भी लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट हम इशू कर रहे हैं। अभी मोस्टली जो बारिश रहेगा सौराष्ट्र कच्छ में, आज अगले 5 दिन के लिए सौराष्ट्र कच्छ में बारिश होने का संभावना है। गुजरात रीजन के लिए भी परसों से बारिश शुरू हो जाएगा। इवन अभी भी गुजरात रीजन में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकता है। पोर्ट वार्निंग अभी दिया गया है ग्रेट डेंजर 9, जो कि पोर्ट का जो साइक्लोन का राइट में जो पोर्ट है उनके लिए, वो पोर्ट जैसे जखाओ, नौलखी और भी 2-4 पोर्ट हैं, उनके ऊपर ग्रेट डेंजर 10 सिग्नल होस्ट किया गया है। साइक्लोन बिपरजॉय, जिसकी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ एरिया को हिट करने की संभावना है, इससे निपटने के लिए पश्चिम रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे
इस मानसून इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम हमारे जो डिवीज़न है और उनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं। स्टेशंस की बात की जाए तो स्टेशंस पे हमने जो जितने एहतियाती कदम है वो सारे उठाए हैं। जो हमारे डीजल लोकोमोटिव हैं अलॉन्ग विथ कोचिंग रेक्स हमने एक्टिवेट करके रखे हैं स्टेशंस पे, जिससे इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंसी और इमरजेंसी उनको यूज़ किया जा सके। हमारे यहाँ फुल सौगण है रखने की बोट, और आज तक पर आए थे कहने कि आपकी बोटों को सलामती स्तर पर रखना, तो हमने वो लंगर दिए रख दिए। अभी तक आज कह गए कल से गुंजेल जाना पड़ेगा हम आपको ये काम छोड़कर। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारे ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं, और 5 दिन से यह बहुत ही यहाँ हवा करंट लगता है पानी का। तैरे के रूप में सबको ये अलर्ट किया है कि भाई यहाँ नहीं जाने का, ऐसा सब बोला है सबको। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि ये साइक्लोन गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। उस वक्त उसकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वो कई इलाकों में तबाही मचा सकता है। फिलहाल आपको हम विंडी की एक इमेज दिखा रहे हैं कि कैसे ये मूव हो रहा है। देखिए आप 13 और 14 तारीख का मूवमेंट भी देख लीजिए। ये जैसे जैसे ये पास में जाता हुआ साइक्लोन आपको गुजरात के तटीय इलाकों में दिख रहा है। ये दरअसल अभी 12 तारीख है। 13 तारीख यानी कल किस तरीके से यहां पर मूवमेंट होगा वो भी देख लीजिए, और 14 और 15 पर नजर लगाइएगा। ये मूवमेंट है वो गुजरात के तटीय इलाकों को छूता हुआ, और खासतौर पे 15 तारीख को गुजरात के तटीय इलाकों को दिखता है, यहां पर दिख रहा है। और इसकी ये आपको मैं बता दूं, ये जो चीज है आपको जो रेड लाइन के साथ बीच में दिख रहा है, ये दरअसल इसकी आई है। ये इसकी आई है जो उसकी मूवमेंट फिक्स करते हैं, और वो अभी गुजरात के तटीय इलाकों में खासतौर पे इन कर्व पे और पहले ये जा रहा था मस्कत की ओर, फिर जा रहा था वो कराची की ओर, अब ये ड्रिफ्ट करता हुआ कराची की ओर, यानी अब ये इस तरीके से मूव होता हुआ दिख रहा है। We shall now be slipping into a short break, but do stay with us as we come back with more news updates right here on CNN News 18. His father on one day grew suspicious, followed his son. Turns out his son was going to the Sector 23 Jama Masjid and not to the gym. What would you say to parents who are watching this? Obviously, parents have, a lot of parents who are watching this have kids who are playing video games, and it's a different world out there. You don't know, what these video games are, who your kids are talking to. What would you say to them in light of this case that has come to light? My Ram Ram to everyone. And Zaka, you're absolutely correct. As a parent, even I can appreciate that it is very difficult to keep track that in this blind world of web ki dunya, it is so difficult to track that what children are doing. Though parents, they try to do their best that what they are doing, they try to keep the track, but still it is very difficult. I will say, at least parents should keep on checking the history, what their kids are doing on the net, on the web. It is very, very, at times if you talk about the teenagers, it becomes very difficult. They take it as a challenge. They think that parents are trying to intrude in their privacy, but it is for their own good. I think parents, they have to keep a check on their kids. Mm-hmm. And at the same time, if any clue comes out, I think they should not keep it to themselves. It should be immediately reported to the police, cyber police, and on the internet as well. Okay. So this is what I want to say, because it is not about, and it is not the matter of any of the political party or any of the sarkar. Yeah. It is a social ailment, I can say. And if I talk about the religion conversion mission which was going on, that is obnoxious. These people were targeting young brains. They were trying to brainwash them, lure them. This is very incorrect. This is a malice. That is absolutely incorrect. So we have to keep check on. So let me just give some details. I want to get Tausif Ahmed Khan also. Now, what the UP police are claiming, and they mentioned this in their submissions in court today as well, in the transit remand application that they moved,
The alleged conversion racket started during the COVID lockdowns in 2020 when schools were shut. Teenagers were exposed to online classes. There were minors, reportedly from Faridabad, Ludhiana, Maharashtra and Ghaziabad, who virtually met this man, Shahnawaz, at a gaming platform called Fortnite. On these platforms, you can chat with fellow gamers, you have to team up with fellow gamers, and you have to win these games. The first alleged conversion, Tausif, came to light of a Jain boy from Ghaziabad. Now, the police say that... Welcome back. You're watching the morning news on CNN News 18. And now we have some news from the south, wherein following the victory of the Congress party in Karnataka, government employees pressurized government to implement the poll promises. Remember, Congress had promised to scrap the new pension scheme and reimpose the old pension scheme in its manifesto. After the victory, government employees are accusing that the Siddaramaiah-led government are trying to delay the proceedings. Now, the NPS Employees Association on Monday met DK Shivakumar urging the Deputy CM to fulfill the party's poll promise of restoring the old pension scheme. DK Shivakumar has assured that the decision on this shall be taken forward and a meeting with the party leaders shall be chalked out with a plan to restore the OPS. Now, it is important to note that the around 2.2 lakh government employees come under this NPS in Karnataka. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ only our demand is scrap NPS, restore old pensions. He asked some time, 1 or 2 months. We want some time. He discussed with their and then we will announce. They will asking for one more meeting to us with our organization, and then they will announce. Okay. Sir, like how long will you wait for this, sir? Is there a deadline which you have given to the government? No. It is a preliminary stage. No, we are. He says we want some time. We are asking for some meeting, and then we will decide. After that, only the organization will decide what we do, and they will incorporate to their manifesto. No. They will do. I hope to 100%. I hope they will scrap the NPS. Why are you hurrying? It is between we and the OPS leaders. We will meet them. We'll sort it out. We know how to do. We'll look at. We'll have to come out with some formula. We are on the job. Now we are shifting our focus to a very different story, wherein the 23-year-old Insha Mushtaq, who was blinded during the 2016 Kashmir protests when a pellet bomb cracked open her skull, is once again in focus. Insha has cleared class 12th with first division, and it is her indomitable spirit that led her to defy all the odds. News 18 JKLH's Irshad Malik with this special report. Take a look. हमारे साथ है बात करने के लिए इंशा की कहानी इस तरह है। 2016 में नामसाइज हालात की वजह से शोपियां में भी हालात बहुत ज़्यादा खराब थे और ऐसे में इंशा एक हादसे का शिकार हो चुकी। इंशा की आंखों में पैलेट लगे और वो बीनाई से महरूम हो चुकी थी और उस वक्त ये कहा गया कि इंशा शायद अब अपनी ज़िंदगी बड़े कठिन दौर से गुजार सकती है और इसके आगे बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकते हैं। लेकिन इंशा ने हिम्मत नहीं हारी। इंशा ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कल जब 12th का एग्ज़ाम आया तो डिस्टिंक्शन लेके उन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया। सारे लोग इंशा को बधाई दे रहे हैं। हमारी न्यूज़ 18 की तरफ से भी इंशा को बहुत बहुत मुबारकबाद। बात करने के लिए हमारे साथ है इंशा। इंशा, ये बताइए 2016 में उस वक्त आप कहाँ थी जब आपकी आंखों में पैलेट लगे, तो क्या माहौल रहा उस वक्त? यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था 2016 में। तो मैं खिड़की पे थी और मैंने खिड़की खोली तो मुझे पैलेट्स आ गए। मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत रखी, उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का फेस किया और उसके बाद मैंने 10th क्वालिफाई किया और उसके बाद
3 इयर्स तक मैंने DPS में ज्वाइन किया, वहाँ पे कोर्स किया, ब्रेल कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और ओरिएंटेशन मोबिलिटी कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक वहाँ पे किया और 11 से 2021 में किया मैंने। आज मैंने 12th क्वालिफाई किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 12th क्वालिफाई किया आज अच्छे मार्क्स से। क्या सरकार की तरफ से आपको आज तक किसी तरह की रियायत मिली, किसी तरह की मदद मिली? हाँ बिल्कुल मिली थी, सरकार की तरफ से मुझे ये मदद मिली, गैस एजेंसी मिली, लेकिन आज तक वो ये चालू नहीं हो गई है और मेरे फादर को गवर्नमेंट जॉब मिला है सरकार की मदद से। तो आगे क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह आगे मुझे प्लान है, मैं बैचलर्स करना चाहती हूँ प्लस IAS कोच, ताकि जो मेरे जैसी लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट बने, किसी पे डिपेंड ना रहे और लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे क्या इरादा है, क्या बनना चाहती हो आप? मैं आगे बनना चाहती हूँ IAS ऑफिसर, ताकि जो मेरे जैसे लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट बने और हिम्मत नहीं हारेंगे, तो आगे बढ़े, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे। अगर हम इंशा उन दिनों बात करेंगे 2016 में जिस तरह हालात बने, नामुसाइद हालात की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी तरह वो पायलट के शिकार हो चुके हैं। मैक्सिमम जो लड़के यानी कि नौजवान लोग थे उनकी वो विदाई से महरूम हो गए, उन्होंने हिम्मत हारी, कईयों ने पढ़ाई छोड़ दी, कई लोग मजदूरी कर रहे हैं। या अगर हम इस साल की बात करें जो 65% जो है रिजल्ट निकला है, तो जो कैंडिडेट्स जो है वो पास नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या मैसेज है? उनको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, उनको भी अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। फेल तो सब होते हैं लाइफ में, तो एक बार फेल होना चाहिए, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखनी चाहिए उनको, ताकि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यही मेरी मैसेज है उनके लिए। यानी कि इंशा का साफ कहना है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिन कैंडिडेट थे जो 12th में अपना जो है पास नहीं कर पाए, वो हिम्मत ना हारे और इंशा की तरह, इंशा बीनाई से महरूम है और उसके बावजूद भी इंशा ने इतने अच्छे मार्क्स लेके 12th जो है पास किया है, तो उन लोगों के लिए जो है एक मशाल राह है इंशा। तो इंशा का यही कहना है कि किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बार बार यही हम भी कहते हैं कि उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है, इंसान मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि पहले हम कह चुके हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू विलिंग माइंड, यानी कि इंसान अगर शौक और मेहनत रखे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। A rather motivating story that was. Well, but now we're going to slip into a short break, but do stay with us as we'll be back shortly with more news and developments right here on CNN News 18.